for process creation. So I hope you can all see my screen. All right, let's get started. So, so we have so many processes in the system. So how do you think they all get created? So basically, when, for example, a Linux operating system boots up and the operating system is done initializing the hardware, setting up memory, rest of the different things, it creates this one special process called as the init process, right? And it is the init process that then goes on to create children processes, and then these children processes have the capability of creating more processes. So basically what I'm trying to say is that processes can create children, and these children can create further processes. So you have a tree of processes. Okay, so and a process that creates a process, that's called a parent. What created as a child, or a group of them called children. Each process gets a PID, okay, a process identifier. It's usually a unique integer that is given to each of these processes. When a process gets created by a parent, well, there are different options, right? The parent might request that the parent and the child, they share all resources like memory, files, different things are shared completely, or only a subset of the parents resources are shared by the child, or they do not share anything. We will look at all of these things in details in the chapter for threads. And when a child is created, either the parent and the child, they can execute concurrently. Okay, like the parent and the child, they both get into the ready queue, and then the scheduler selects any one of them. It can select the parent to run first or the child to run first, in any order at once, but they have the ability to run concurrently. Or the parent, it creates a child, then the parent waits. It waits until the child exits, and then the parent continues after that. So while the child is executing, the parent is waiting. Once the child exits, then the parent continues to execute from there. We will see how all of that works in today's chapter. So I was telling you about a tree of processes, and I was telling you about the init process. The init process is the special process that is created by the OS. This is the first process to exist. Okay. And then this process goes on to create a login process, which asks you for your username and password. If your password is correct, it then goes on to show you a shell, which is the bash shell. Right? Then on the shell, you can issue commands like the ps command for looking at the list of processes, the emax command. Emax is an editor. You can run gcc if you like. So the bash process then creates its own children. So basically, you see a tree of processes in any operating system. A process definitely has a parent, except the init process, which is like the root of the tree, does not have any parent. And a parent can have a bunch of children. Okay, is this much clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay, so let's see how processes are created in the Unix operating, the set of Unix operating systems like Mac OS, Linux, BSD, and these kinds of operating systems. So, okay, so in these operating systems, the parent process uses the fork system call to create a child. Okay, so what happens if you use fork in its most basic form is that the parent has some memory allocated to it, in which it has code, it's got data, it's got heap, and there is a stack at the top. Okay, we all know what's the use of all of these things. So let's just say this is the parent. When the fork system call is executed by the parent, the operating system code creates a new process, the child process. Okay, and what the operating system does is it creates an exact copy of the parent.
keep in mind it's a copy. It's not the same thing though. The contents are the same, but the locations are different. Okay. The client memory locations are different. They belong exclusively to the client, sorry, to the child. And the parent memory locations are different, but the contents are the same at the time of creation of the child. Okay. When the child is getting created, the contents are straightway copied from the parent. Okay. So exact copy is made, the same code, the same data, the same heap, and the same stack. Since the stack is also the same, now we have two processes running in the system, the parent and the child. Where is the parent running right now? It is running inside the fork system call, right? It is inside the fork system call, basically running inside the OS code. So when the child is brought to life and it also starts executing, it is obvious that the child is also running inside OS code because the child is an exact copy of the parent at that point of time. So let's look at a program to see how all of these things work. So before I do that, let me just go to the next slide. Just create a copy of this, right? I'll just keep this here, keep this here. Okay, then we will continue from here. All right. So this is the parent. Ignore the program on the right. That does not exist yet. So the parent enters its main function. It creates a PID variable. Okay. We will see what it is going to store in this PID variable. It is basically going to store a process ID. The process ID, you might say, Jyoti, it should be an integer. Well, it is actually an integer internally. Just that they give this fancy name PID underscore T because tomorrow if this type is going to change to something else like a long or something, then all of us won't have to go and change our programs to say long here. They will just go and make the change in the header files, and the rest of the developers will just have to recompile their files, not have to change the code. That's why this just put this facade in the front saying that this is PIDT instead of directly saying it's an integer. But it is actually an integer. It stores the process ID of a process. We will see how this is created, why this is created later. Then the parent program, parent process moves on to this line of code. Okay. And this is the fork system call. This goes to OS code. Okay. System calls are addressed by the operating system. We know that. So the OS code then creates a copy of this parent here. Okay. A child gets created. And a child has exactly the same code. As I told you, the child is given exclusive memory, its own set of memory locations, but the contents of those memory locations are exactly identical to that of the parent. So the parent has this code on the left, and the child is also going to have this code on the right. So even the child is going to have a memory location where PID is going to be stored. The parent has its own memory location where PID is going to be stored. But keep in mind that the parent and the child are now two separate processes. They can store different values in PID. If the child changes this PID, then the PID for the parent is not going to change because the code is identical. But the code is now residing in two separate locations, one for the child, one for the parent. The PID variable is existing on the stack. Well, there are two different stacks. The contents are identical at the time of fork, but after fork, they can have different contents because the locations are different. It's like, I take one plate and I put biryani on that, and then you want the exact same plate, exact same amount of biryani, then okay, I give you the same. At that point, those two plates look the same. But once we start eating, then the plates will start looking different because it's not just one that biryani was identical when it was being served. After that, it can look different, right? All right. So this fork is called, and at that point, the OS creates a child process which has the exact same code inside it. All right. Well, let's assume the fork did not succeed. If the fork does not succeed, then the child is not going to be created by the operating system. Okay. And then the fork system call is going to return a failure value into the PID variable. It's going to be a negative value. We all know that negative values in Linux, they mean failure. So the parent is going to go and run this code. If PID is less than 0,
then you print that the fork has failed into the standard error stream, return a 1. A return value of a non-zero return value in C basically means, signifies that it's a failure, and the parent is going to exit. Okay, no child was created because the fork failed. Now let's assume the fork succeeds. The fork succeeds and the child is going to be created with an exact replica of the memory contents of its parent. And then when the parent starts, when the fork returns, right, to the parent, well, now both the child and the parent, they're inside OS code. Okay, even the child is in the OS code, because it's an exact copy of the parent. If the parent is running inside OS code, the child is also going to be inside OS code, because the stack, everything is the same as the parent, right? So the OS code is going to return a value to the parent program. It is also going to return a value in the child program. Okay, and it is going to return different values. To the parent, it is going to give the PID of the child. Okay, it is going to give the process ID of the child. To the child, it is going to return a 0. That is how these two programs will know, and they will take different paths. Otherwise, they will be confused who is the parent, who is the child, because they are running the same code. Something has to be different, right? So let's focus on these two programs separately. The fork system call, if it succeeds, it returns the PID, the process ID of the child, to the parent. So the parent then continues, and if it checks, and the PID of a process is a positive number always. The PID is not negative because the fork succeeded, and so it moves to the else if here. Is the PID equal to 0? No, it's a positive number, so it goes to this else, and it executes this code. And here it waits. Wait is also a system call. We will look at this in details in this class itself. In this case, what it does is it waits for this child process to terminate. So the parent is going to wait on the child to terminate. Only then it will continue to the next line. Okay, it's not going to do this printf. This process is going to go into the waiting state. We have seen, right? There's a state called as the waiting state. So the parent process is now waiting. Let's focus on the child now. The child is a different process but has the same code. But as I told you, fork is going to return a 0 to the child. Okay, so PID is 0. It comes here and checks, is PID negative? No. Is PID 0? Yes. So the child is going to execute this code. The parent executed this code, but the child is going to execute some other part of the code. What is it going to do? It is going to run this line. This exec is another system call. Well, it is not exactly exec. These are a family of system calls like execlp, execve, execv. So in the lab, I will tell you the details, the minor differences between these calls, but they all belong to the exec family of system calls. What do these system calls do? Well, it is only natural that the child actually goes on to eventually run a different program. In the beginning, it will have a copy of the parent's program, not the same program, a copy of the parent's program, but eventually it would want to run its own program. Why should it run the parent's program? Even if now we were able to bring it to a different part of the program which the parent did not execute, using the difference in the return value of the fork, right, of the fork call. Even then, are we then expected to write the entire child program in this area? Then, well, we will then end up, if the child creates another child, then is the code of that child again going to be some else clause inside this? No, then this program is going to become very complicated. No, rather we will have this one small program, which is basically the program for the parent. The child will run this program a little bit, but then it is going to replace this program with another program. Okay, that is not going to affect the parent. The parent's memory locations are not going to be changed depending on what the child does, and vice versa. The parent does something, the child is not going to be affected. Similarly, the child does whatever to its memory after the fork, the parent is not going to be affected. So the parent still has the program on the left, but the child can choose to run a different program. So here it is choosing to run the ls program. The ls program, as we have all seen in the lab, lists the
contents of the current directory. So we have chosen that program. So what this system call is going to do, the system call is going to call OS code. It's a system call. So the OS code is going to be invoked. The OS code is going to erase this program for the child from the child's memory. It is going to then load the ls program. The ls program will have the main function again, right? It will have its own main function. It will have a bunch of lines of code which will display the contents of the current directory, and then it will return. Let's just say it will return with an exit status of 0. Okay. So this system call is going to remove this old program which this child got. How? The fork system call gave it. It gave it as a copy of the parent's program when this child was getting created. Okay, that program is now removed is now getting removed by the operating system. It is going to take the code of ls program from the disk and load it to the memory location of this child process, and then it is going to this exec system call is not going to return to this program. Why is that? Because this program is not even there anymore. It's gone. So the exec system call cannot return back to the same program. Rather, it will go to the OS code, load the new program, go to the main function of the new program. That's all it can do, because now this program is in memory. The old program is gone. So the main function of the ls program is going to run. Okay. And then the child is going to exit at some point of time and say, okay, I executed. I'm done. Then what the OS is going to do, it is going to wake up this parent, because this parent was waiting on the child to terminate. Now the child has terminated. Whether with the same program, whether with some other program, or whether with whatever, the child has terminated. Does not matter whether if it has replaced that program with some other program. The child has terminated and the parent was waiting on that child. Now this parent, which was in the waiting state, will become ready and it will start running when the scheduler runs it. What will it do? It will print child complete. Then it is going to return a 0, and then itself it is going to exit. Did you all get a feeling of what is going on here? Yes. Okay. So the fork system call returns twice. It returns once into the parent. If it is successful, if it gives the PID of the child to the parent, it returns. Sir, Yes. sir, child PID can't be greater than 0. It is greater than 0. Sir, here it is, sir, 0. Who? Where? Sir, in the right side of the fork. No, that's not the child. That is not the PID of the child. That is just a 0 value that is given by fork to distinguish between the child and the parent. The PID of the child is a positive value which is stored in the PID variable of the parent. In the PID variable of the child, a 0 is going to be stored. That is not the PID of the child. It is just a special value returned by the fork call. It is not the PID of the child. Any child you create by using fork will always get a 0. That's not the PID of any process. It is just a special value, so that because the programs are same, right? How will the parent know it's a parent, the child know it's a child? It's only by this difference of values which the fork system call returns. The PID of the child is going to be a positive number. Only the parent will have access to it at the time of fork. Okay. If the child wants to know its PID, then there is a get PPID. There is a get PID system call. There is a get PID system call. There is a get PPID. It's a parent process ID system call. Every process can know its own PID, but fork is going to give the child process a 0 and the parent process the PID of the child. That is how they will know which is the parent, which is the child. Is that clear to you? Yes, sir. When I say the PID is 0 for the child, it's not the PID of the child. It is just the return value of fork. That's all. That's all. So how fork returns twice? So the fork code, though it is invoked by the parent, it creates a copy and then it returns twice. Once to the parent with a positive value, once to the child with a 0 value. That's how they know, okay, I am the parent and I am the child. Now the child can take a different path, the parent can take a different path.
The child can also go on to replace the program with a different program. Okay, and then that system call does not return back to the same program. The program is gone. It will return to the main function of the new program. Then once it terminates, if the parent happens to be waiting for the child, then it will be woken up. Okay, let's move on. Every process. Yes, any questions? सर समझ नहीं आ रहा अच्छे से. क्या समझ में नहीं आया, बोलो. सर fork, what is fork sir in this? फोर्क क्या है समझ में नहीं आया पूरा कहानी नहीं. खत्म होने के बाद? ठीक है, फिर से बात करते हैं इसके बारे में. ठीक है, मैं इसको पूरा भी इरेज करता हूं. ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर से बात करते हैं. फोर्क एक सिस्टम कॉल है. सिस्टम कॉल क्या होता है? जब हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ काम करवाना होता है, हमको सिस्टम कॉल करना पड़ता है. वैसे तो सी में हम बहुत सारे फंक्शंस कॉल करते हैं, है ना. कभी कोई दो नंबर को ऐड करना है, फैक्टोरियल निकालना है, तो हम फंक्शन कॉल करते हैं. वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता नहीं है, वो कोड यूजर के पास ही होता है, तो अंदर ही अंदर हो जाता है. कुछ चीजें हैं जो कि हम कर नहीं सकते, इसीलिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प चाहिए होता है. वो हम खुद कर भी नहीं सकते. हम क्या प्रोसेस बना लें? हम क्या सीधा हार्ड ड्राइव में जाके? कुछ नहीं, वो ओएस के थ्रू जाना पड़ता है. जो ओएस के थ्रू जाना पड़ता है उसको हम सिस्टम कॉल्स बोलते हैं. तो फोर्क एक सिस्टम कॉल है जो कि कोई भी प्रोसेस कॉल कर सकता है, और जब वो करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक चाइल्ड बनाता है, पैरेंट प्रोसेस का चाइल्ड बनाता है. वैसे ही नए प्रोसेसेस ऐसे ही बनते हैं. ठीक है, तो यहां पे देखो, ये राइट साइड में जो है उसको भी इग्नोर करो, ये लेफ्ट साइड में देखो, ये मेरा पैरेंट प्रोसेस है. ठीक है, पैरेंट प्रोसेस में ये वाला कोड है. ये वाला कोड उसके मेमोरी में पड़ा हुआ है कोड सेक्शन में, तो वो चला रहा है प्रोग्राम को. तो क्या करेगा? मेन फंक्शन में जाएगा, उसका पैरेंट जो प्रोसेस है जाके एक पीआईडी वेरिएबल बनाएगा. बनाने के बाद वो क्या करेगा? जाके यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर रहा है. ये कोई साधारण फंक्शन कॉल नहीं है, ये एक सिस्टम कॉल है. ये सीधा ओएस के अंदर जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाता है और बोलता है कि एक चाइल्ड प्रोसेस बनाओ. तो ये फोर्क क्या करता है? अगर ये फोर्क चल गया, अगर चल गया, नहीं चलने के भी चांसेस है. अगर तुम्हारे पास मेमोरी कम है तो एक नया चाइल्ड बनाने के लिए जगह ही नहीं है, तो नहीं बना सकते. तो चलो, अगर ये ना चला तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक नेगेटिव वैल्यू वापस करेगा पीआईडी को, जो कि यहाँ पे चेक हो जाएगा इस एफ में, और ये पैरेंट ही खुद क्विट कर देगा रिटर्न 1 करके कि चलो ये फोर्क हमारा चला नहीं तो क्विट. तो चाइल्ड कभी बन ही नहीं पाया. तो अगर मान लो फोर्क चल गया, एक चाइल्ड बन गया, तो ये चाइल्ड का जो मेमोरी का जो कंटेंट है ना, वो पूरा आइडेंटिकल, पूरा सेम रहेगा पैरेंट जैसा. जो पैरेंट में है मेमोरी में जो भी कोड है, चाइल्ड का सेम कोड रहेगा. पैरेंट जहां पे एग्जीक्यूट अभी कर रहा है, चाइल्ड भी वहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. जो भी मैलक किया था उसका कॉपी बन जाएगा. जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स थे उसके कॉपीज बन जाएंगे. सबके कॉपीज बनेंगे, सेम कॉपीज बनेंगे उस टाइम पे. उसके बाद क्या कैसे चेंज होगा वो तो कोड के ऊपर डिपेंड करता है. वो चाइल्ड कैसे भी उसको चेंज करे, पैरेंट अलग से चेंज करे, वो अलग अलग चेंज कर सकता है. पैरेंट कुछ भी चेंज करे वो चाइल्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, चाइल्ड जो भी करे पैरेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके कॉपीज बन चुके हैं. ठीक है सर तो अब, fork हाँ बोलो बोलो बोलो. हेलो, बनाने के लिए चाहिए मतलब. हाँ नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया, फिर से बोलो. fork, हेलो हेलो. हाँ हाँ बोलो बोलो. fork सर मतलब हमें चाइल्ड बनाने के लिए चाहिए, हाँ, ताकि प्रोसेस को डिवाइड करके जल्दी से एग्जीक्यूट कर सके, ऐसा कुछ. वो क्या करने के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. इजी हो मुश्किल हो, उनके हम वो कौन से कारण के लिए कर रहे हैं हमको नहीं पता. ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं? एक ही प्रोसेस तो नहीं हो सकता ना, नया प्रोसेस तो बनेगा ना. तो कैसे बनेगा? ये नया प्रोसेस बनाने का तरीका है. ठीक है, तो हमने फोर्क चला के एक नया प्रोसेस बना दिया. तो जब नया प्रोसेस बन गया, उसमें जो कोड है सब कुछ है वो पूरा सेम होगा पैरेंट जैसे, लेकिन वो कॉपी में चल रहा है. कॉपी में चल रहा है, वो सेम जगह से नहीं उठा रहा. वो पैरेंट के वेरिएबल्स को चेंज आगे जाके नहीं कर सकता, लेकिन कंटेंट्स ले लिया उसने. ठीक है, जैसे कि जेरोक्स कर लिया किसी ने, उसके बाद वो पेपर पे वो कुछ भी लेके उसको फाड़े फेंके, क्या फर्क पड़ता है? जेरोक्स का टाइम सेम होगा. उसके बाद पेपर एक बार उनको दे दिया किसी और को, वो पेपर लेके कुछ भी करे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, तो कॉपी बन गया यहाँ पे.
तो मैं ये बोल रहा था कि पेरेंट अभी चल रहा है फोर्क के अंदर, चाइल्ड भी फोर्क के अंदर चलेगा, दोनों फोर्क के अंदर चल रहे हैं, दोनों ओएस के अंदर हैं अभी। तो ठीक है, तो वापस तो आएंगे ना, कुछ तो एक वैल्यू फोर्क रिटर्न कर रहा है, पीआईडी के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर दोनों को सेम वेरिएबल वैल्यू मिले फोर्क का, तो दोनों का एग्जीक्यूशन भी पूरा सेम ही चलेगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर चाइल्ड बनाने का। तो ओएस कोई भी तरीके से बताएगा ना कि तुमको ये वैल्यू दूं, तो तुमको पता चलेगा कि तुम पेरेंट हो, और क्योंकि सेम प्रोग्राम है दोनों में। अगर अलग प्रोग्राम्स होते तो चाइल्ड को पता चल जाता कि मैं चाइल्ड हूं और पेरेंट पेरेंट है। प्रोग्राम सेम है, कोड सेम है दोनों में, अभी अभी सेम है, आगे जाके चेंज हो सकता है, अभी सेम है। तो इसीलिए फोर्क अलग अलग वैल्यूज देता है। जैसे चाइल्ड को 0 वापस करता है और पेरेंट को चाइल्ड का पीआईडी दे देता है। पेरेंट को बताता है कि तुम्हारा जो चाइल्ड है उसका नंबर ये है, और चाइल्ड को 0 वापस करता है। तो आगे जाके जब चेक करते हैं, पेरेंट जाके चेक करता है तो नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि फोर्क तो सक्सेसफुल चल गया। तो फोर्क का वैल्यू इधर 0 होगा या पॉजिटिव होगा। 0 तो पेरेंट में नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट को चाइल्ड का पीआईडी दिया गया है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे आएगा, देखेगा 0 है नहीं, आगे निकल जाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर लेगा पेरेंट। यहाँ पे ये वेट करेगा, ये वेट सिस्टम कॉल है, आगे जाके बताता हूँ कि वेट का पूरा कंप्लीट पिक्चर क्या है। यहाँ पे बस ये समझ लो कि ये वेट सिस्टम कॉल क्या करवाता है, पेरेंट को वेट करवाता है। किसके ऊपर? चाइल्ड के लिए। जब चाइल्ड एक बार टर्मिनेट होके आ जाए उसके बाद पेरेंट फिर आगे बढ़ेगा, तब तक वो सोता रहेगा। तो ये यहाँ पे फंस गया, ये प्रिंट तक जाएगा नहीं, अभी नहीं जाएगा, तो पेरेंट अभी बैठ गया। ओएस यहाँ पे चाइल्ड को देखते हैं, चाइल्ड क्या किया, चाइल्ड को 0 वापस आया पीआईडी में, नेगेटिव तो है नहीं, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। ये 0 0 ये 0 है, मैच कर गया। तो यहाँ पे हम चाइल्ड का पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि पेरेंट से अलग चलेगा, क्योंकि पेरेंट तो इसके अंदर नहीं घुस पाया, पेरेंट तो यहाँ पे आ गया सीधा। तो पेरेंट ने अलग कोड चलाया, चाइल्ड ने अलग कोड चलाया। तो चलो कुछ हद तक ये हो गया कि चलो चाइल्ड कुछ अलग कर रहा है, कर तो रहा है अलग, कुछ सेम करता तो फायदा कुछ नहीं होता चाइल्ड बनाने का। लेकिन क्या पूरा कोड इधर ही लिखे हैं? तो फिर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड, जो यूजर के सारे कोड एक ही प्रोग्राम में रहेगा। चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स करते करते बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो वैसे कोई कोई करता नहीं। क्या करते हैं कि ये जो सिस्टम कॉल है, EXEC वाला सिस्टम कॉल है, ये क्या करता है, जो करंट प्रोग्राम है ना, इसको पूरा उड़ा देता है, इसको रिमूव कर देता है। इसको निकालने के बाद जो भी प्रोग्राम तुम उसको बोलोगे, ये प्रोग्राम को वहां पे डाल देगा। तो ये चाइल्ड का भी तो एक मेमोरी है ना यहाँ पे, जहाँ पे कि वो नीचे कोड रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये कोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये पूरा मेमोरी लोकेशन को निकाल के हम वहां पे नए कंटेंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला प्रोग्राम पड़ा हुआ है, इसको निकाल देगा ये EXEC, ये LS का जो प्रोग्राम है ना, इसको लेके फिर यहाँ पे डाल देगा वो। तो फिर जो EXEC है वो फिर यहाँ पे रिटर्न कर नहीं सकता, आगे जा नहीं सकता, ये यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में निकल गया। तो ये EXEC जब सिस्टम कॉल कॉल करते हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में जाता है, सिस्टम कॉल है भाई तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में जाएगा ही। और ओएस ने क्या किया, ये पुराने प्रोग्राम को हटा दिया। कहां से? चाइल्ड का, पेरेंट का वही पड़ा हुआ है, लेकिन चाइल्ड का हट गया। चाइल्ड का हटने के बाद क्या करेगा, ये देखेगा चलो LS प्रोग्राम चलाना चाहता है, तो LS प्रोग्राम के कोड को उठा के इसने डाल दिया। फिर ये पुराने प्रोग्राम में वापस आ नहीं सकता, क्योंकि वो है भी नहीं। तो ये कहां जाएगा, ये LS प्रोग्राम के मेन फंक्शन में जाएगा। LS हर प्रोग्राम का मेन फंक्शन तो होता ही है ना, तो उसमें जाएगा, उसको चलाने लगेगा। तो वो LS प्रोग्राम अपना काम कर देगा, करने के बाद वो भी रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करता है तो वो प्रोसेस बेसिकली टर्मिनेट हो गया, उसका काम उसने कर दिया, चाइल्ड ने उसका काम कर दिया। तो ये पेरेंट के पास हम देखेंगे, पेरेंट तो सो रहा था, वेट कर रहा था कि चाइल्ड कब खत्म हो। चाइल्ड खत्म हो गया तो पेरेंट को जगाया जाएगा, हम जगा देंगे पेरेंट को। जब पेरेंट जाग गया तो फिर वो आगे आगे प्रिंट एफ करेगा, यहाँ पे चाइल्ड कंप्लीट प्रिंट करके रिटर्न करके वो भी निकल जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये जो चाइल्ड का प्रोग्राम है, मतलब ये हाँ। यहाँ पे EXCLP जो है वो एग्जीक्यूट, मतलब वो सॉरी तो वो मतलब रन करने के बाद फिर ये जो बोल रहा है कोड, मतलब पूरा रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे क्यों होगा, मतलब नीचे का वही तो कोड? है उसका काम, क्योंकि वो चाइल्ड कोई दूसरा प्रोग्राम चलाएगा ना, कुछ हद तक शुरू शुरू में थोड़ा सा वो सेम प्रोग्राम को चलाएगा, आगे जाके अपना खुद का प्रोग्राम चलाएगा ना। ठीक है। सेम सेम प्रोग्राम क्यों चलाए? मैं चाइल्ड का कोड किधर लिखूं? यहाँ पे लिख दूं पूरा कोड, ये एक से को काट के यहीं पे लिख दे सारे कोड चाइल्ड का, ये करो ये करो ये करो ये करो फिर खत्म हो जाओ। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ये चाइल्ड को अगर और एक चाइल्ड बनाना है तो फिर क्या करेगा, ये पूरा इफ देन एल्स पीआईडी वीआईडी का कोड पर इधर डालेंगे फिर पूरा। समझ रहे हो?
फिर उस चाइल्ड को और एक चाइल्ड बनाना है तो क्या इफ एल्स फिर से उसके अंदर, ये पूरा तुम्हारा इंसेप्शन जैसा हो जाएगा, है ना? हाँ एक के अंदर के अंदर के एक के अंदर के अंदर एक, नहीं ऐसा नहीं होता। सेम प्रोग्राम दोनों क्यों चलाएं? शुरू शुरू में चलाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके तो चाइल्ड को कुछ अलग चलाना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये यहाँ पे इनिट प्रोग्राम चल रहा है। इनिट ने जब नया प्रोसेस बनाया होगा तो यहाँ पे भी इनिट का प्रोग्राम कुछ हद तक होगा, लेकिन आगे जाके फिर इसने EXEC करके लॉगिन प्रोग्राम चलाया होगा यहाँ पे, इसीलिए तो दूसरा प्रोग्राम चलाया इसने। ताकि डिफरेंट वैल्यूज को दे। हाँ मतलब डिफरेंट प्रोग्राम चलाए भाई, दूसरा प्रोग्राम हाँ, चलाया, डिफरेंट F2 को चला प्रोग्राम करेगा। चला इसलिए ताकि मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देना, ताकि चेक ही करना है ना हमें क्या चेक करना है? कि जो वैल्यू आ रहा है वो सही, मतलब जो भी सिस्टम कॉल किया हुआ है हाँ तो वो जो वैल्यू आ रहा है वो मतलब एक्सपेक्टेड है या नहीं, पता नहीं ऐसा मुझे तुम क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कौन से सिस्टम कॉल के बारे में बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये इनिट जब फोर्क करेगा तो वो इनिट प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, कुछ हद तक तो ये चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो देखेगा कि सिस्टम कॉल में अरे मैं तो चाइल्ड हूं, क्योंकि फोर्क का वैल्यू मेरे पास 0 आया हुआ है, तो मैं तो चाइल्ड हूं, तो मैं ये सेम प्रोग्राम ना चलाऊं, मैं अपने आप को लॉग इन प्रोग्राम से रिप्लेस कर दूंगा। तो फिर जाके ये पूरा इसका मेमोरी कंटेंट इरेज होने के बाद लॉग इन प्रोग्राम आया होगा। लॉग इन प्रोग्राम चला होगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछा होगा, पासवर्ड अगर मैच हो गया तो उसने फिर फोर्क बना के ये प्रोसेस बनाया, और ये भी कुछ हद तक लॉग इन प्रोग्राम चलाया होगा कुछ टाइम तक। लेकिन ये देखिएगा अरे मैं तो चाइल्ड हूं, मेरे पास फोर्क का जो रिटर्न वैल्यू 0 आया, चलो 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 मैं बैश चलाता हूं, तो फिर वो EXEC करके बैश चलाया होगा। ये क्यों ऐसा होता है? तुम फिर पूछोगे कि अरे फोर्क के टाइम में बोल दो ना कि कौन सा प्रोग्राम चलाना है, चाइल्ड जाके अपना प्रोग्राम सीधा वही चलाएगा और पेरेंट अपने यहाँ पे अपना चलाएगा। ये थोड़ा सा सेम प्रोग्राम कॉपी करके आगे जाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है तुम लैब में देखोगे, जब हम शेल में ये सब खुद करेंगे बैठ के तब पता चलेगा। ओके सर। ठीक है, जब पता चलेगा कि क्यों ये सब करते हैं। जो शेल होता है तुम्हारा, ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पे तुमने मारा जीसीसी test.c, तो ये एक प्रोसेस है। तो शेल क्या करेगा? फोर्क करेगा। फोर्क करने के बाद ये तुम्हारा पेरेंट है और ये तुम्हारा चाइल्ड है, दोनों अभी वो शेल प्रोग्राम को ही चला रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये चाइल्ड को ना थोड़ा सा कुछ अगर प्रिपेयर करना है अपने आप को कि कहां से इनपुट ले, कहां से आउटपुट रखे। मान लो ये जीसी से test.c करके मैंने ये कर लिया, ये मैंने समझाया था ना रिडायरेक्शन ऑपरेटर, ये करके मैंने out.log कर दिया कि जो कंपाइलर का जो भी आउटपुट है, वार्निंग है, जो भी है, ये यहां पे डिस्प्ले नहीं करके सीधा out.log में डाल दो। तो ये जो चाइल्ड है ना, खुद को EXEC करके GCC लोड करने के पहले, आगे जाके GCC तो लोड करना ही है, पेरेंट तो अपना शेल चला रहा है, लेकिन चाइल्ड तो को इवेंचुअली GCC चलाना है, लेकिन अभी के लिए तो शेल चल रहा है क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी बना हुआ है दोनों का। तो ये क्या करेगा, ये चाइल्ड वाला थोड़ा सा जाके देखेगा कि चलो मुझे मॉनिटर में प्रिंट नहीं करना, तो मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है मुझे ये वाले फाइल में सेट करना है, करने के बाद मैं EXEC करूंगा। उसके बाद GCC को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइल में जाना है कि मॉनिटर में जाना है, वो पहले से करके EXEC किया जाता है। तो ये जब हम करेंगे लैब में तुमको क्लियर हो जाएगा कि ये मैकेनिज्म हम क्यों क्यों यूज करते हैं। अभी के लिए फिलहाल माइंड में ये रखो कि फोर्क कॉपी बनाता है, अलग अलग वैल्यूज रिटर्न करता है ताकि पेरेंट को पता चले कि वो पेरेंट है और चाइल्ड को पता चले कि वो चाइल्ड है। चाइल्ड फिर आगे जाके अपने आप को रिप्लेस करवा लेता है EXEC करके, पुराने प्रोग्राम को हटवा के नया प्रोग्राम डलवाता है वहां पे। फिर पेरेंट वेट कर सकता है, चाइल्ड के खत्म होने के बाद पेरेंट फिर रिज्यूम करता है जहां से कि वो वेट कर रहा होता है। समझ गए? यस सर। Okay, so every process when what they're done with what they've been doing, they are expected to run. If it's a normal execution, they're expected to reach the exit system call. Okay, so you might ask, then when we write programs, we basically do return 0 or 1 or something like that. We do not use the exit system call. Well, let me tell you that the compiler, when the compiler sees that this is a return statement of the main function, which is a special function, because if you return from main, you basically are going to end the program. You return from any other function, that's fine. You will go back to the function that called you. But who called main? The OS. So when you return from main, that means your program is going to end. It's a special case.
In that case, the compiler is going to add the exit system call for you. Okay, and then whatever value you give here, there's the same value will be passed to the exit system call. Okay, and these are nothing but the exit statuses. So this is a way for the process to tell its parent, whoever started this process, that whether I was able to successfully execute myself or whether there was a problem or whatnot. Just like when we return 1, we signify a failure. We return 0, we signify success. Even children can do the same thing. And when this happens, then whatever status is passed by the child to the exit system call, that status can be made available to the parent. Child ने बोला कि I am successful. My exit status is 0. So the parent also deserves to know that. And how will it know it? It will know it using the wait system call. The wait system call is a little bit involved. It kind of looks like this. वहां पे हमने बस ऐसे यूज कर दिया इसको, वेट और नल करके, क्योंकि हमको ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि वो चाइल्ड का एग्जिट स्टेटस क्या है क्या नहीं था, लेकिन पूरा जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो ये है, और यहाँ से बहुत सारी चीजें पता चल सकता है, मैं आगे जाके बताता हूँ. So howsoever the child exits with whatever status it gives to exit system call, that status can be made available to the parent using the wait system call. That is why the parent keeps waiting for the child. इसीलिए वो वेट करता रहता है कि चलो उसको खत्म होने दो. वो खत्म होता है, उसने कैसे काम किया क्या नहीं किया मैं देखने के बाद आगे बढ़ूंगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. And there is also an abort system call. A parent can call the system call to abort the execution of a child. So the child has exceeded whatever the resources allocated to it, or the task is not required, or the parent wants to exit, but the operating system does not allow a child to execute while the parent is not there. Linux is not like that. There are some operating systems where a child must have a parent. The child cannot outlive the parent. It's like, it's not natural. I mean, in the real world, usually children live longer than parents. But in some operating systems, the parent must exist before the child, at the point the child exits. I mean, the child cannot keep running while the parent is gone. And those cases when the parent is trying to exit and the child has not completed whatever it has been doing, and the parent can abort the child and say, no, you stop because I need to stop, so you also need to stop. Also, some operating systems, as I told, they do not allow the parent to exit first before the children. So, and if that process just exits without aborting the children, right? If it's a good process, then it will abort the children first and then it will exit. But if the parent has, let's just say, 2 children and those children have further children, and the parent is like, okay, I want to exit, without caring, without waiting for the children, without aborting the children, directly it just exits. Then the OS will take note of that and will say, arre, I cannot allow all your children to exist when you are not there. So what I'm going to do is I'm going to kill all your children. And since these processes are gone, then their children also will be killed. So it's like a dhadadhad, back to back, all the processes in that tree, they will be killed. That's called as cascading termination. Cascading का मतलब वही है ना कि एक के बाद आगे करते सारे लोगों को, सारे processes को यहाँ पे terminate किया जाएगा. Okay. So I was telling you that I will discuss the complete nature of the wait system call. So let's just say there is a parent which has 3 children. Okay. And the PIDs are like 2, 3, 4, the process IDs of the children. Now let's just say all of these 3 children are running and the parent has executed this command. Okay. This function has been executed by the parent. So there is no guarantee that 2 will terminate first, then 3 will terminate, then 4 will terminate. They can terminate in any order. Depends on how much time they got from the CPU, the order in which the scheduler scheduled them. It depends on a bunch of different things. What kind of inputs they got. Many things are there. So let's just say number 3 here terminates. So the parent was waiting and the parent will be okay enough if any one of its children terminates. Anyone, कोई एक भी अगर terminate हो गया तो parent को जगाया जाएगा.
That's all. But then how will the parent know which child terminated? The parent has 3 children. Don't you think कि parent को पता चलना चाहिए कि कौन सा child मरा है? Parent needs to know that, right? Yes, sir. Yeah. So then the wait system call will give the PID of the child. Okay. It will tell 3. The child with PID 3 terminated. The parent will know that, okay, 2 and 4 are still running. 3 terminated. Okay. It can do whatever it wants to do with that information, but it's our duty to tell the parent that, okay, this child terminated. And if this child just terminated with the exit system call and it passed a 1, okay, saying that I was not able to terminate properly. I was not able to do whatever I was asked to do. So this was a failure. How will the parent know that? Well, it is passing this status variable by a reference, by pointer. So the wait system call can change its value, right? This is how things happen in C. If you want a function to change a value, then you pass it by pointer. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. So then it's passed by pointer. So the status will have a value of 1. वो आगे आके चेक करेगा PID कौन सा था, status क्या हुआ, क्या नहीं. It can further go and wait again. And then maybe 4 will terminate. Again, the PID will come as 4. Then again, it will wait for 2. So it might end up issuing 3 wait system calls. It will have to. There are 3 children, so it will have to wait 3 times. So this is how wait works. We will do all of these things in the lab. So at that point, these things, you will actually write C program for doing all of these things. So it will become very interesting. Couple of very important things. So pay a lot of attention. Up to this, we will stop the class. Okay. It's like 15 minutes more. We'll finish this in 5 minutes and we will go. So let's just say this is a parent process. This is a child process. So the parent does a fork and this is a fork, and the child then maybe does an exec and then runs a different program, and the parents keeps executing, but it never waits for the child. Well, that wait might be there somewhere or may not be even there. We don't even know about that. The operating system does not know if the parent is ever going to call wait. Maybe it might call wait later, or it will never call wait, but it is still running. The parent has not terminated. Let's just say the child exits. It exits. It's gone. But the parent is still running. It is not waiting. It might wait for this child later, but until now, अब तक उसने wait system call execute किया नहीं है parent ने. अब child जब खत्म हो गया, terminate हो गया, it becomes a zombie. Why becomes a zombie? Because इसका थोड़ा सा जो information है, जो exit status है, उसको कहीं पे तो रखना पड़ेगा हमको लेके. We need to keep it somewhere. क्योंकि आगे जाके ये parent अगर wait call करता है, करेगा कि नहीं हमको नहीं पता, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन OS को पता नहीं है ना, है ना. अगर ये करता है तो इसका जो एग्जिट स्टेटस है 1 है कि 0 है, वो उसको देना पड़ेगा पेरेंट को लेके हमको. अब तक पेरेंट ने किया नहीं है वेट का कॉल, तो इसीलिए ये प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़ॉम्बी होके जीता है कुछ टाइम तक. इट इज काइंड ऑफ उसका बाकी का सारा मेमोरी हटा दिया जाता है, वो रखते नहीं है, लेकिन उसके जो थोड़े थोड़े कुछ तो रखना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि पेरेंट को अगर आगे जाके पूछना है कि भाई क्या हुआ मेरे चाइल्ड का, उसको देना पड़ेगा. तब तक ये ज़ॉम्बी होके जीगा. दूसरा क्या हो सकता है कि चाइल्ड जो है वो चल रहा है, वो मरा नहीं है, लेकिन पेरेंट जो है उसने चाइल्ड बना दिया और उस थोड़े से टाइम जाके वो खुद एग्जिट कर गया, खुद मर गया. उसका मतलब पक्का है कि वेट तो किया नहीं होगा. अगर वेट करता तो मरता नहीं, एग्जिट तक पहुंचता ही नहीं ना, कि वेट पे फंस जाता. चाइल्ड के खत्म होने के बाद ही उसके आगे निकलता, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा. पहले खुद ही एग्जिट कर गया, लेकिन चाइल्ड चल रहा है, तो वो चाइल्ड ऑर्फन हो जाता है, पेरेंट है ही नहीं. फिर क्या होता है इन दोस केसेस, द इनिट प्रोसेस यूजुअली बिकम्स द पेरेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑर्फन्स. और जब ये चाइल्ड आगे जाके फिर एग्जिट करेगा, कभी ना कभी तो जाके एग्जिट करेगा, और जो भी स्टेटस दिया यहाँ पे 0 दिया, ये इनिट प्रोसेस यहाँ पे वेट करवा के इसको रीड कर देता है ताकि ज़ॉम्बी ना बन जाए वो. ठीक है, ये तो ज़ॉम्बी बन जाएगा ना फिर से, फिर ये चाइल्ड हट जाता है.
समझ में आया डिफरेंस? Were you able to understand the difference between zombie and orphan? Yes, sir.